how much DSA have you used as a software engineer? हमने ना कभी DSA नहीं पढ़ा. We never taught data structures algorithms. like कि क्यों पढ़ा फिर? You don't really have to write your data structures and build your algorithms from scratch. It's like low level design is not about design patterns. It's not just about design patterns, right? But as you become senior, this becomes even more critical because now you are reviewing others' code. So if you do not know how to write good code, review कैसे करोगे? Importance of HLD, हाँ काफी हुआ है मार्केट में सिस्टम डिजाइन का. So system design is a problem of Lego blocks. हाय गाइस, I'm निशांत सर. आज की वीडियो में हमारे साथ है अर्पित भयानी सर. वो भी सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर है अनअकैडमी में एंड उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया है, Amazon, D-Shop, Practo एंड सब में काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है उनका. उन्होंने सिस्टम्स को स्क्रैच से बिल्ड किया हुआ है एंड उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है. तो आज की वीडियो में हम काफी सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे कि एक्चुअली लाइक डीएसए यूज कितना होता है तुम्हारे डे टू डे लाइफ में व्हेन यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. इसके अलावा तुम लो लेवल हाई लेवल डिजाइन कहाँ से पढ़ सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है उनकी. उससे पहले एक छोटा सा उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे. So yeah, first of all, thanks to the Nishant for having me over here. I still remember we having that conversation about a year back. काफी मजा आया था, काफी interesting conversation था, and I'm really hoping to have really amazing conversation with you again. And basically before I jump into my intro, many congratulations on your 100k. काफी solid community, काफी solid value addition to our community. That is much more important than anything else. So like really proud. Right? So I'll start with a very quick intro of mine. So hey there everyone, my name is Arpit. For last 10 years, like I still could not fathom it. Like 10 साल हो गए in the industry. I graduated in 2012. Then worked for a year, did my masters. Then have been very fortunate to have worked for companies like D-Shop, Practo, Amazon, and now Unacademy. पहले 8 साल तो I was an IC where I was operating as an engineer. And then I transitioned into a leadership role कि बोले चलो मैनेजर बन के देखते हैं कि क्या होता है. And it has been an amazing journey to be really honest. काफी कुछ सिखा दिया है. And mostly from the experience. Like nothing very explicit about it, but हाँ काफी अलग experience था, काफी मजा आया. So yeah, have been fortunate to have worked for amazing companies, amazing products, amazing features, amazing engineering problems, and now more amazing people problems. तो वो सब चल रहा है. Apart from that, I still code every single day. It may not be a job, but on hobby projects, like trying to build my own fancy programming language for kids to animate stuff. I've been teaching a course on system design on the side. I'm doing C Python deep dives, doing some random stuff here and there. But I just love engineering. So the best part was I was not thrown into engineering. I chose engineering because I love this field. Like so I'm basically that kid. तो बहुत मजा आता है मेरे को to just keep writing stuff, keep building stuff around that. ठीक है, तो यार मदर्स डे में 40% ऑफ आ गया कोडिंग निंजास का एंड प्लस इसके साथ 25% ऑफ और भी होगा. तो जाके जल्दी से नीचे वाले लिंक पे क्लिक करो एंड जो भी तुम्हें कोर्स वगैरह खरीदना है खरीद लो. If you don't know about Coding Ninjas, Coding Ninjas is India's one of the largest coding educational platform. यहाँ पे तुम्हें सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, तुम्हारा डीएसए इन C++, जावा, पाइथन. एंड जो तुम्हारे इंस्ट्रक्टर्स हैं यार वो स्टैनफोर्ड IIT ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने Amazon, Facebook जैसी कंपनीज में काम किया हुआ है एंड कोर्स स्ट्रक्चर काफी ज्यादा अमेजिंग है. इसके अलावा यार डीएसए C++ वाले कोर्स में 200+ हिंट वीडियोस हैं. अगर तुम्हारा फिर भी डाउट वगैरह क्लियर नहीं होता है तो तुम्हारे पास यार टीए सपोर्ट तो है ही. 1-on-1 डाउट तुम्हारे सॉल्व हो जाते हैं 3 से 4 घंटे के अंदर. तो 25% ऑफ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. इसके अलावा 40% फ्लैट ऑफ चल रहा है, तो जाके कोई भी कोर्स वगैरह तुम ले सकते हो. अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा कि लाइक डीएसए कितना ज्यादा यूज होता है, क्योंकि आपको इतना सारा एक्सपीरियंस है, इतनी सारी कंपनीज में काम किया हुआ है, काफी सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आप डेटा स्ट्रक्चर्स कितना ज्यादा यूज कर रहे होते थे अपनी डे टू डे लाइफ में? Yeah, that's an interesting question. How much DSA have you used as a software engineer? काफी डिबेटेबल है. वेयर आई हैव सीन वेरी डाइवर्स ओपिनियंस. कि कुछ बोलते बिल्कुल काम का नहीं है, कुछ बोलते बहुत काम का है. लाइक यू नो इट शुड नॉट बी एक्सट्रीम. इट डेफिनेटली शुड नॉट बी एक्सट्रीम. यू कैन फाइंड अ स्वीट स्पॉट इन द मिडल. सो आई टेल यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने क्या किया या फिर मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि मुझे कैसे हेल्प किया डीएसए. To be really honest, from my graduation college, हमने ना कभी DSA नहीं पढ़ा. Like it was all theoretical. हाँ बस stack होता है, queue होता है, linked list होता है. That's all we restrained ourselves to. We never understood the practical applications of it. And had no idea at all.
Then when I went to Triple IT Hyderabad, then I saw, suddenly people were like, competitive programming, CodeChef, lead code, Spoj, and so on and so forth. That's when I understood that, these are data structures algorithms which you have to use to solve such problems. And that's when we understood that, it's actually useful. And then my perception about data structures algorithms changed a bit, because before that it was all theoretical only, right? But now what? Now that I was starting from scratch, so then I was like, chalo, now at least I know that this has to be done for internship and placements, so karna to padega. So that's when I started doing that, solved 400 odd questions just to get that, basically just to get that momentum ki, I can solve that question. So I just did that one winter of 2013 and done. Okay. But then it helped me solidify my understanding, and that was more than enough. So then when I joined, ab ye to tha ki from the college, I knew that data structure algorithms were required to crack interviews. Now what next? When I joined the organization, 90-degree flip. We never talked data structures algorithms. I'm like, kyun pada phir? Right? Kyun competitive programming, kyun lead code, kyun wo weekly challenge and all. And then I started cribbing about it, hey, faltu mein time waste kiya and all. And I'm like, chalo, theek hai. But at least then I got encouraged in my work, doing what we all do, building products, building features, putting into the database, getting data out, and all of that. And then what happened is, so very limited usage during early careers. I was still writing CRUD and all. So it was okay. But then something very interesting thing happened. As soon as I became a senior, suddenly data structures algorithms started playing very important role. Like how that happened. It was not that I was writing those algorithms or I was building those data structures from scratch, but I was finding tools and technologies that supported those data structures. Giving you an example, that I wanted to build something like a follow-following relationship at a particular workplace. अब ये तो था कि वो यूज करना है, but we know that it is best modeled in graph. क्या मैं खुद का ग्राफ बनाऊंगा? नहीं. I'll use a database that gives me that graph, right? Then for example, then मुझे वो distance निकालना था कि how far is one person from another person in a social graph. I'm like, ये तो shortest path problem है, right? So then use a graph database. उसमें I invoke that function that gave me shortest path between the two, right? तो ऐसे करते करते चीजें बढ़ती है. So what I've observed is the data structures and algorithms that we study in the college is more like that foundation that you need. You will use those data structures and algorithms in the future, but in a different flavor. Like you need to know those data structures and those algorithms so that you can actually pick the right tool and the right tech to solve your problem, because solving problem is more important. You don't really have to write your data structures and build your algorithms from scratch, but it gives you that understanding. Okay? So as you grow senior in your career, you would appreciate data structures and algorithms more, not from the interview side of things, but more importantly from, hey, I want this algorithm, I've read this algorithm, so kaun sa aisa database hai, kaun sa aisa library that gives me that algorithm out of the box? Why reinvent the wheel? Right? One final example to conclude this answer is B+tree. We all know that SQL storage use B+trees and all, but तुम लोग यार database में तो डाला ना, performance तो आ गई ना, now what? The idea is that when you grow senior, अब क्या होगा कि database will start to choke. And then you'll see कि if you don't know the internals of B+tree, you'll not know the parameters to tune, then how will you extract the max performance out of your database? So having that understanding of B+tree makes a lot of difference. Like I've been personally using those concepts, buffer pools, कौन सा algorithm, कौन सा cache eviction algorithm लगाया, क्यों लगाया, क्या performance आएगी, all of that to tune the performance of a database for a few of my customers. Got it. Okay. So next question है कि how important is low level design, कि हम कब low level design use करना start कर देते हैं, and जब आप career start कर रहे हो तो कौन से level पे जाने के बाद आपको थोड़ा familiar होना start हो जाना चाहिए? Importance of low level design. Yeah, I get that a lot. Yeah, low level design is important, but again, my answer is very much attuned to my experience, and what I've observed is like low level design is not about design patterns. It's not just about design patterns, right? So people think, hey, low level design hai, so let me just study all 100 to 100 design patterns that are out there. I'll mug up everything and I'm good at low level design. No. Low level design, like so I've met engineers who write really solid low level code,
but they don't follow any specific design patterns, right? So at the end, the goal of the code that you write is to solve a problem, number one, and that's the most important thing. Number two, it should be extensible. As in, tomorrow, if a new requirement comes in, it should take you minimal efforts to extend your solution, right? तो बहुत सारे if else डालने के जगह पे use inheritance, right? कि हर जगह पे डालो फिर वहां से fork करो. So use inheritance, polymorphism, use OOP concepts to do that. Yeah. Structure your code so that adding or supporting a new database or replacing your existing database with a new one takes a minimal effort from your low level code. Otherwise पूरा testing करना पड़ेगा. Right. So the key goal of you doing a good low level design should be around कि is your code readable enough? Is your code extensible enough? Right. Bus. Start with this. If you start with this, वहीं पे half the battle is won. ठीक है? And then obviously you need to know few important design patterns because obviously वो theoretical foundation is important for you to know कि what exists. Right? अगर पता ही नहीं है what exists, you would think that your code is the best. Like unless you do that, unless you explore that, you would not know na कि your code is actually good or not. So that's where having that understanding makes the difference. Where you know कि hey, something like this already exists. So hey, I should have used a particular design pattern over here. I didn't know. अरे I thought मतलब अपनी ख्याल में नहीं रह रहा कि मेरा code बड़ा अच्छा है. Right? So that's where low level design are extremely important while you are an IC, where you would have to write, where you're actually writing a low level code, because after a few years in your career, you would write very less low level code as compared to what you're used to. But in that, you have to make the most. But as you become senior, this becomes even more critical because now you are reviewing others' code. So if you do not know how to write good code, review कैसे करोगे? Problem हो जाएगी ना? थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ता है, थोड़ा सा तो आना ही चाहिए, right? But if you are just starting out in your career, start afresh. Just make sure that you are writing extensible code, you are writing readable code, you know a few design patterns. While at work, you will learn automatically, right? अगर सीखने नहीं मिलता है, talk to your manager. Most of the problems are solved by talking to your manager. Got it. Okay. मतलब अगर सीखना चाहते हो तो बस ट्यूटोरियल्स देख के या फिर बुक्स पढ़ के ये नहीं हो पाएगा. थोड़ा कोड बेसिस वगैरह पढ़ना स्टार्ट करो और खुद इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो चीज़ों को, और बाकी काम के साथ साथ तुम सीखते जाओगे. तो इतना कुछ बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है. इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है हाई लेवल डिज़ाइन. तो हाई लेवल डिज़ाइन कितना लोगों को आना चाहिए, कौन से लेवल पे, SG2 SG3 कब जाके वो इतना ज़्यादा यूज़ होना स्टार्ट होता है, कौन सी सीनियर पोजीशन पे, एंड एग्जैक्टली होता क्या है हाई लेवल डिज़ाइन. इम्पोर्टेंस ऑफ HLD. हाँ, काफी हुआ है मार्केट में सिस्टम डिजाइन का. या HLD जो है, इट्स ऑल्सो वेरी सिमिलर टू LLD. लाइक अगेन जैसे LLD में व्हाट वी स्पोक इज रीडाबिलिटी चाहिए, एक्सटेंसिबिलिटी चाहिए. हाई लेवल डिजाइन भी सेम है, राइट? यू नीड एक्सटेंसिबिलिटी, you need readability, but readability in a different sense. So extensibility मतलब let's say you design an architecture, right? Architecture भी क्या बड़ा word है और कुछ नहीं, 2-3 components join करके तुमने बना दिया. You designed a data flow, you designed an architecture, ठीक है? अब इस पे if you'd want to spin off a new feature, how easy would it be for you to add new components into your architecture to support that new feature? This is all about doing a good high level design. Okay. Right? So understanding that there are no single point of failures, कि यार एक मशीन मर गया तो क्या होगा, एक डेटाबेस मर गया तो फॉल बैक है क्या, पूरा नेटवर्क आउटेज हो गया तो क्या होगा. You just have to be very pessimistic and think everything that you have in your infrastructure will go down and just design it. So high level design is, and basically this is how you should approach high level design first of all. Second is like when you talk about importance of it, now here spread it like basically break it down into your stage of career. So if you are very young, let's say a year or 2 year old in the industry, इतना नहीं exposure मिलेगा high level design पे, because you will be doing more of low level design things, right? You will not be doing a lot of high level design things, right? So given that you would not be doing a lot of high level design things, then what? तो फिर बोलोगे कि हम सीख कैसे रहे? So that is where YouTube videos, around few good channels that are there, go watch them. पता होने में कोई harm नहीं है, because at the end it's all engineering, right? तो करने का, right? तो उतना देखना
keep learning. But this is more about your preparation phase when, let's say, you typically get exposure to designing systems or exploring systems once you hit an SG2, like so once you become an SG2 rather. So जैसे एक बार तुम SG2 बन के थोड़ा ज़्यादा exposure मिलना चालू होता है, but this does not mean that you cannot get exposure beforehand. Like I've met really solid, like I've been myself very fortunate to have build high-level architecture for a few of our small, not so critical microservice even when I was like 2 months old or 3 months old in the industry. Like I was given that opportunity. Like it was the trust that the manager had in me कि कुछ तो कर लेगा ये. Right. So high-level design is important, but for the first few years, think of it, even if you don't get an exposure, think of that as your preparation phase. By watching YouTube videos, by watching conference videos and all, that you are preparing yourself for the SD2 part. And then वहाँ पे तो करना ही है, मतलब काम ही होगा वो करने का, तो करना पड़ेगा फिर, ठीक है. And then one good thing about high level design is that it teaches you divide and conquer very well. Because when you tackle a big high level design, you'll not be given, you'll not at work, you'll not be given कि अरे पूरा Instagram एक दिन में बना दो, 1 घंटे में बना दो, ऐसा नहीं होगा, right? So you'll be given enough time to design a robust architecture. So the idea would be to एक बड़ा problem दिया है, break that down into micro problems. Let's say 10 micro problems. हर problem को optimally solve करो. जैसे हर problem को optimally solve किया, together as a string वो पूरा optimally solve होगा. और when I say optimal, it's not just about कि ये best time, best ये, but also robustness, fault tolerance, वो ज़्यादा important होता है, because time थोड़ा ज़्यादा लग जाए ना, that is still okay, but अगर down जाता है, that is impacting your business. This is something that you need to understand, that whenever you are designing a high level arc, it has to be fault tolerant. अब वो करने के लिए ना थोड़ा experience चाहिए, थोड़ा conference videos, blogs से थोड़ा ज्ञान चाहिए. And otherwise वो बहुत मुश्किल हो जाता है. But हाँ, that's the importance of high level design. Typically 0 to 2 पे you are in your learning phase. More than 2 years is where you get to do stuff, and then you will be accountable for it कि फटा तो अरे इसने कोड लिखाया, इसने कोड लिखी थी तो ये गया, राइट? तो वैसा मतलब वही जो डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह, एल्गोरिथम्स वगैरह सीखते हैं, वो इसी चीज के लिए सीखते हैं कि तुम बड़ी प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, एंड फिर फाइनली उन छोटी प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमली सॉल्व करोगे तो जो पूरा प्रोडक्ट बनेगा वो तो ऑप्टिमल बनेगा ही. अब आपने बात करी लो लेवल डिजाइन की, हाई लेवल डिजाइन की, अब कुछ रिसोर्सेज वगैरह बता सकते हो जिससे लाइक इफ वन स्टार्ट्स टू लर्न, अब क्योंकि आपने बोला कि जब थोड़ा सीनियर SG1 हो जाता है, फिर कुछ टाइम का एक्सपीरियंस, तो लो लेवल डिजाइन तो साथ साथ सीख रहे हैं, बट हाई लेवल डिजाइन पे आने लग जाता है, तो कुछ रिसोर्सेज वगैरह हो आपको पता हो तो बता दो. रिसोर्सेज, हाँ, मतलब फ्री रिसोर्सेज तो आई नो काफी है, मतलब नॉट रियली किडिंग. व्हेन आई स्टेप्ड आउट ऑफ कॉलेज कुछ नहीं था यार, इंटरनेट पे कुछ नहीं था. इंटरनेट पे ना लिटरली सिर्फ फेसबुक था और कुछ नहीं करते थे हम लोग. एंड इवन फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ माई करियर कुछ पता ही नहीं था ना इंटरनेट पे कुछ होता है, ये होता है, वो होता है. बट हाँ, टुडे बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सपोजर दैट यू फोक्स आर हैविंग, यूज दैट टू योर एडवांटेज. That's what I would recommend. So high level resources, like यहाँ पे bifurcate yourself, like if you are in the first couple of years of your career versus you are in the next 20 years of your career. So 0 to 2 and 2 to N. ठीक है, तो 0 to 2 years के इसमें, because it's about you preparing for your career, like not just interviews. Like interviews तो बहुत दूर की, मतलब interview तो जाने दो. Preparing for your career, so you need to have a very strong foundation, right? तो start with beginner friendly videos. YouTube पे सिस्टम डिजाइन सर्च करने का ना, जो वीडियोस आते हैं ना उतना देख लेना, ठीक है. अब वो वीडियोस से you'll have a foundation to do. Like कि ऐसे बनते हैं सिस्टम, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे सोचना होता है, right? But that is not the only, like that does not cover everything around system design. Like when I have been building systems in real world, कुछ भी नहीं लगता उसमें से, but वो जो components that I know from those videos, from those resources and all, पता चलता है कि ऐसा कुछ होता है, right? So go through that and understand कि कौन सा component है. So system design is a problem of Lego blocks, where you have a ton of Lego blocks. अब उसको बस मिक्स एंड मैच करना है कि अच्छा मेरे को हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो कैश उठा के डाल दो, अब कैश चाहिए तो मुझे असिंक्रोनस चाहिए तो क्यू उठा के डाल दो, राइट? सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोस पैटर्न्स एंड बिल्ड अराउंड दैट. सो दैट्स हाउ HLD is done, that's how system design is done, right? So when you are in the first 2 years of your career, system design videos on YouTube, good resource. Medium के basic blog, सारे basic ही blog भरे वहाँ पे,
गुड रिसोर्स, कुछ है एडवांस, नॉट रियली गेडी, कुछ है काफी सॉलिड, बट मोस्ट ऑफ द ब्लॉग्स दैट यू विल फाइंड ऑन मीडियम काफी बिगिनर फ्रेंडली होते हैं. गो थ्रू दैट, राइट. देन जैसे वंस यू आर वेरी अकस्टम टू दैट ना, वंस यू मूव टू योर नेक्स्ट फेज कि यार अब मुझे बेसिक समझ में आ रहा है, नाउ व्हाट नेक्स्ट, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट वॉचिंग conference videos, right? And just to put a shameless plug into this, I have put in my heart and soul into putting 3 engineering videos every week. तो उसमें like 18 minutes video काफी लंबे होते हैं, but I go in depth of every single thing out there because you know that's what is very important rather than just scratching the surface कि है ऐसा कुछ होता है वैसा कुछ होता है. That's how I've structured my course as well. That's how I have that's how I have been putting videos on YouTube as well. कि going in depth, not just scratching the surface कि अच्छा ऐसा होता है कि क्यों करना है. Ask those questions. Why? So I do that very often. I also run a newsletter where I posted, like, go through my website. I posted some very advanced algorithms जो actually use होते हैं. Very interesting ideas around distributed systems, around clever algorithms, around Python internals. काफी solid content है. One good thing that I would highly encourage you all to do, everyone knows consistent hashing. Everyone talks about कि consistent hashing theoretically वो ring और nodes डाल दिया. Have anyone implemented it? It's there on my blog. Like, I would highly encourage you to it's so pathetically simple to implement consistent hashing. पढ़ो, like find out, like मेरे मतलब मैं खुद का ही नहीं, बाकी के भी बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल एजुकेटर्स, इंडिपेंडेंट एजुकेटर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स होते हैं जो काफी सॉलिड इंजीनियरिंग ब्लॉग्स लिखते हैं. गो रीड देम. हाउ टू फाइंड देम, गूगल सर्च करो, मिल जाएगा, राइट. बट स्पॉट दोज हिडन जेम्स इन द ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन. यही नहीं जो यूट्यूब मुंह पे फेंक के मार रहे सिर्फ वो देखोगे. फाइंड, बिकॉज गुड जेम्स आर हिडन इन द 3rd पेज ऑफ गूगल सर्च, 4th पेज ऑफ गूगल सर्च. थोड़ा देखने का वहां पे, बाकी सारे एसईओ फ्रेंडली है, ठीक है. सो दैट इज समथिंग दैट आई वुड हाईली एनकरेज यू टू डू, क्योंकि बहुत सारे चीजें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए यू हैव टू गो थ्रू दैट ग्राइंड कि अरे अब तो थोड़ा एडवांस वाला पढ़ना पड़ेगा. एंड यू वुड रियलाइज इट. बहुत रिसोर्सेस है, टू बी रियली ऑनेस्ट, इंटरनेट में फ्री रिसोर्सेस इतने ज्यादा है दैट यू डोंट नीड एनीथिंग, राइट. बट एंड बेसिकली दैट्स हाउ यू वुड अप्रोच लाइक लर्निंग हाई लेवल डिजाइन. और बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल है, बट मैंने कुछ नाम दे दिए. तो जस्ट टू समराइज, गो टू कॉन्फ्रेंस, इन्फोक्यूब, मीडियम ब्लॉग्स, यूट्यूब चैनल मार्टिन क्लेपमैन का ब्लॉग. यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई चैनल एंड माई न्यूज लेटर फॉर दैट. काफी इंटरेस्टिंग चीजें मिल जाएगी वहां पे, राइट. So yeah, that's it. इसके अलावा यार तुम्हारा सिस्टम डिजाइन प्राइमर करके एक गिटहब पे रेपो है जिसपे तुम पढ़ सकते हो लो लेवल और हाई लेवल डिजाइन. एंड थैंक यू सो मच अर्पित फॉर टेकिंग आउट टाइम. काफी ज्यादा मजा आया आपके साथ बात करके. एंड अर्पित का एक यूट्यूब चैनल भी है, तुम उसको जाके फॉलो कर सकते हो. वहाँ पे हाई लेवल डिजाइन रिलेटेड, सिस्टम्स कैसे बिल्ड करते हैं, इनसे रिलेटेड काफी सारे वीडियोस आती रहती हैं. तो यार थैंक्स अटर निशांत फॉर हैविंग मी ओवर हियर. काफी मजा आया कन्वर्सेशन में. आई होप कुछ और वैल्यू एडिशन कर दूं मैं तुम्हारे कम्युनिटी में. मतलब काफी सॉलिड कम्युनिटी, काफी सॉलिड है. बट थैंक्स अगेन फॉर हैविंग मी ओवर हियर. इट हैज ऑलवेज बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. आज भी काफी सही था.